Assalamu alaikum student, welcome to another lecture of environmental engineering. So let's go through the review of the last lecture. So in the last lecture we have discussed about the water quality analysis, and we have discussed some of the waterborne diseases, and then we discussed the basic difference between the water quality guidelines and standards, and we also discussed some water quality guidelines and standards. So today is lecture number 11, week 9. In today's lecture, we will discuss the basics of water treatment. ठीक है, so water treatment की तरफ जाने से पहले we will discuss the basic terms and the basic type of the treatment or processes which are involved for the treatment of the water. We will discuss the basic concepts in today's lecture. So in basic concepts, we will discuss the mass balance concept, and we will discuss the reactor theory, in which we will go through the different types of the reactor, like a batch reactor, plug flow reactor, continuous flow reactor, and we will also discuss some rate kinetics and rate laws in this lecture. So let's go to the first topic or basic term for the used in the water treatment, that is mass balance approach. It is also known as material balance approach. So mass balance approach is based on principle that mass can neither be created or destroyed, but the form of mass can be altered. For example, that will be converted into liquid or a gas. So mass balance basically provide the basis for describing and analyzing engineering problems. In environmental problem, the time is very important factor. The mass balance approach provides a very convenient way of defining the situation, what occurs within the reactor. That is the transformation of a mass take place when the reaction occurs between the two constitute in a reactor as a function of the time. So concept of transformation is described by the equation. So here I will explain the concept of the transformation in a very simple way and in a similar way to a bank account sheet. ठीक है, that is जैसे कि बैंक अकाउंट शीट होती है हमारी, जिसमें हमारे पास बैलेंस होता है. सो बैलेंस है दैट इज इक्वल टू डिपॉजिट्स माइनस विथड्रॉवल प्लस इंटरेस्ट सर्विस रेट. ठीक है सर, जो भी आपके अकाउंट्स के जो बैलेंस शीट होता है उसमें आपके पास बैलेंस जो है वो दैट इज इक्वल टू द डिपॉजिट, जो मनी आप डिपॉजिट करते हैं, जितना मनी आप निकालते हैं, दैट इज अ विथड्रॉवल प्लस माइनस इंटरेस्ट सर्विस चार्जेस. ठीक है, सो नाउ वी विल आल्सो डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ द मटेरियल और मास बैलेंस अप्रोच. सो यहाँ पर बैलेंस को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू द इनपुट. जो भी आपका रिएक्टर है उसमें जो रॉ मटेरियल गया है, जो भी मटेरियल है वो उसका कितना इनपुट हुआ है, माइनस विथड्रॉवल मीन्स के आउटपुट हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया है, प्लस माइनस इंटरेस्ट सर्विस चार्जेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफॉर्म मटेरियल. ठीक है, यानी जो भी आपने पोल्यूटेंट या जो भी आपने रिएक्टेंट या मटेरियल जो आपने एक रिएक्टर में डाला है वो कितनी क्वांटिटी में डाला है, और उसमें जो आपने प्रोडक्ट कन्वर्ट किया है वो कितनी क्वांटिटी में निकला है, और ड्यूरिंग द देयर रिएक्शन कोई डिफरेंट चीज़ के प्रोडक्ट्स भी बने हुए होंगे, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म मटेरियल. वो मटेरियल किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट इज बेसिकली योर मास बैलेंस अप्रोच. सो मास बैलेंस अप्रोच में हम ये कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. हम ना तो मास को बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, हम उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. So now to explain the basic concept involved in the preparation of the mass balance. First of all, consider the reaction. Consider the reactor. ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड द रिएक्टर. So the first step is to consider the system boundary.
सिस्टम बाउंड्री इसलिए डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि जो भी आपने सिस्टम बाउंड्री डिफाइन किया है तो उस बाउंड्री के अंदर क्या इनपुट आ रहा है, उस बाउंड्री से क्या आउटपुट आ रहा है, वो आपको पता चलना चाहिए. So the first step is to consider the system boundary and identify all the liquid and constituent flows into the system, into and out of the system. ठीक है, सबसे पहले आपने सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ करनी है. आफ्टर दैट यू विल आइडेंटिफाई ऑल द मटेरियल विच इज गोइंग थ्रू दैट सिस्टम बाउंड्री एंड गोइंग आउट ऑफ दैट सिस्टम बाउंड्री. Second step जो है that is to define the control volume boundary जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. In order to identify the actual volume in which the change is occurring. ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने वॉल्यूम में बेसिकली चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इन मोस्ट ज़्यादातर केसेस में जो सिस्टम बाउंड्रीज एंड कंट्रोल वॉल्यूम विल कंसाइड ईच अदर. ठीक है, नॉर्मली जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें हम सिस्टम बाउंड्री और कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री जो है वो एक ही होता है. So let's try to write the mass balance equation for this reactor. So the equation is the accumulation of material in the system that will be, यानी जो ये भी आपका reactor है इसके अंदर जो material जमा हुआ है, accumulate हुआ है, that is equal to input of the material. ठीक है, input of the material minus output of material plus transform material. ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में अगर हम करें दैट इज एक्यूमुलेशन रेट इज इक्वल टू इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन रेट. So the other important thing which should be considered, that is the mass balance is made of 4 items which is given in the equation, that is accumulation rate, input rate, output rate और transformation rate. ठीक है, अब ये जो factors हैं that will depend upon the flow regime और the treatment process. ठीक है, one or more of the term can be zero. इसमें एक से ज़्यादा टर्म जीरो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप का फ्लो रिजीम है और आपका किस टाइप का रिएक्टर है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बैच रिएक्टर कंसीडर करते हैं तो बैच रिएक्टर में हमारे पास कोई इनफ्लो नहीं होता, कोई आउटफ्लो नहीं होता. सो दिस जो हमारा सेकेंड यानी इनपुट रेट और आउटपुट रेट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो फिर हमारा एक्यूमुलेशन रेट बैच रिएक्टर में इक्वल हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेट के. ठीक है, सो इन द अपकमिंग स्लाइड्स हम इन सब तमाम फ्लो रिजीम्स को और रिएक्टर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी मास बैलेंस इक्वेशन जो है वो डेवलप करेंगे. So the next term is the conservative substances. So अब कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस क्या होती हैं? कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, आर कॉल्ड कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस. ठीक है, जो कि वक्त के साथ या पैसेज ऑफ द टाइम के साथ चेंज नहीं होती, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस. ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं विच कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज इन विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरे किसी फॉर्म. सो नेक्स्ट सी अगर हम मास बैलेंस अप्रोच लगाएं ऑन नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस में, मतलब कि हम ऐसे नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस ले रहे हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम. ठीक है, सब्सटेंस विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अदर फॉर्म रिएक्टिंग इन द कंटेनर, मास बैलेंस अप्रोच इज एम्प्लॉयड एज गिवन बिलो. ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? टू डेवलप अ सिस्टम बाउंड्री एंड द कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री. एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि इन मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वी कंसीडर द कंट्रोल वॉल्यूम एंड द बाउंड्री सिस्टम बाउंड्री इज कंसीडर वंस. ठीक है, मतलब कि दोनों हम सिस्टम बाउंड्री और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही कंसीडर करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश द सिस्टम बाउंड्री सो that all the flow of the mass into and out of the system be identified. ठीक है, so you will draw the system boundary which is represented in a black dash lines.
सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं जितने भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जा रहे हैं. सो यहाँ पे Q जो है वो आपके वाटर फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है. C नॉट जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस which is coming in the input in the reactor. ठीक है. V is the volume. ठीक है, जितना रिएक्टर का वॉल्यूम है वो, और C is the concentration of the non conservative substances in the reactor. That is the Q जो कि आपके पास flow which is going out of the reactor, and C is the concentration of the non-conservative substances which is leaving the reactor. ठीक है. So first of all we will take some assumptions. Flow in and out of container is constant. ठीक है. यहाँ पर हम क्या assumption ले रहे हैं कि हमारे पास जो flow है that is continuous flow. ठीक है. कंटिन्यूस फ्लो में ये कि जितना फ्लो इन आ रहा है उतना ही फ्लो बाहर जा रहा है, जितना आउट फ्लो जा रहा है उतना इनफ्लो आ रहा है. सो फ्लो इन एंड आउट जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. तो कांस्टेंट फ्लो में क्या, हम जब कंटिन्यूस फ्लो की बात करते हैं, सो कंटिन्यूस फ्लो इज द फ्लो इन विच द कांस्टेंट inflow is coming in the reactor and constant outflow is going out of the reactor. ठीक है. नेक्स्ट इज द लिक्विड इन कंटेनर इज नॉट सब्जेक्टेड टू इवेपोरेशन. यानी जो भी आपने कंटेनर में पानी लिया है, लिक्विड लिया है, उसमें इवेपोरेशन नहीं हो रही, यानी वो कंडेंस होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही. लिक्विड जो है वो कम्प्लीटली मिक्स्ड है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिएक्टेंट C इज अकरिंग विद इन द कंटेनर. यानी जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी वो आपके इस कंट्रोल वॉल्यूम B में हो रहा है. So now we will write a mass balance equation for a non-conservative substances. So consider the above assumptions. जो भी हमने assumptions ली हैं, जिसमें पहला हमारा पास क्या था कि inflow and outflow that is equal, complete mixing है, कोई water loss नहीं हो रहा आपके reactor में से. ठीक है. So mass balance equation लिखेंगे, that is the accumulation rate that is equal to input rate minus output rate plus transformation rate. Now we will represent it in a symbolic representation. So basically accumulation rate क्या होता है? That is the change in concentration with respect to time. ठीक है. We will represent that dC over dt. ठीक है. और ये जो change in concentration with respect to time हो रहा है, ये हमने कहा था कि ये control volume में ही हो रहा है. So जो V जो है that is the volume of the reactor. That is equal to input rate. आपके system boundary में जो input आ रहा था that is flow into concentration C naught. माइनस आउटपुट क्या है? Q इज इक्वल टू Q इंटू C. ठीक है. प्लस ट्रांसफॉर्मेशन रेट, यहाँ पर जो ये R है दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, और V जो है दैट इज द कंट्रोल वॉल्यूम. क्योंकि ये पहले ही हम assumption ले चुके हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपके कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हो रही है. ठीक है. सो V इज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर विच इज विल बी मेजर्ड इन मीटर क्यूब. dC over dt, that is the rate of change of the reactant concentration within the reactor. Q is the rate of flow in and out of the reactor. C naught is the concentration of the reactor in the inflow. C is the concentration of the reactor in the outflow, and R is the rate of the reaction or the transformation rate. So now consider the steady state simplification. Steady state क्या होता है? Steady state is the state जहाँ पर change in concentration with respect to time that is equal to 0. ठीक है. जो भी आपके concentration change हो रही है with respect to time that will be equal to 0. अब क्योंकि हमने पहली assumption ले ली है कि फ्लो जो है वो कंटिन्यूस है. जब फ्लो कंटिन्यूस है तो हमारे पास कांस्टेंट इनफ्लो एंड कांस्टेंट आउटफ्लो है. सो देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम. सो द चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज dC ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. सो अबव इक्वेशन जो हमारी लास्ट हमने इक्वेशन लिखी थी कंजर्वेशन की, जिसमें हमारे पास उसकी इक्वेशन की राइट साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू 0. दैट इज इक्वल टू Q इंटू C नॉट minus QC plus V into R.
सो अब इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेट कि ट्रांसफॉर्मेशन रेट हमारी किस चीज़ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर Q जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज इक्वल टू 0, सो वी विल टेक इट Q कॉमन एंड C नॉट माइनस C। C नॉट और C डिफरेंट इसलिए क्योंकि कुछ जो कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट की या जो भी कंसंट्रेशन सब्सटेंस की है वो रिएक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस रेट से ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इधर, ठीक है। सो आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया एंड वी विल गेट द equation for the transformation rate, that is R is equal to Q divided by Q into C naught minus C divided by the volume. The next topic we will discuss the reaction kinetics and the rates law. So kinetics relationships are important for the sizing, that is the design of the reactors. Chemical reaction occurs when molecules collide with enough energy to break the old bonds and to create new molecules. That activity depends upon two factors. The first one is the frequency of collision, that is the concentration of molecules in the reacting space. जो number two factor है that is the energy of collision, जो कि temperature of reacting species. So that's why we have to give you a brief concept of the reaction kinetics. The second one is the rate laws. So rate laws is basically the expressions relating the rate of reaction to the concentration of a chemical species, reactants and products, ठीक है। सो रेट लॉस इज बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आपके पास केमिकल स्पीशीज या जो भी सब्सटेंस है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है या किस तरीके से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करके वो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वांटिटी में बनेगा और क्या प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी बनेगी, दैट विल टेल अस द रेट बाय द रेट लॉस। सो सबसे पहले द रिएक्शन काइनेटिक्स एंड द रेट लॉस। सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है? रिएक्शन काइनेटिक्स इज द टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड काइनेटिक रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शंस टाइम डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम काइनेटिक रिएक्शंस कहते हैं। रेट लॉ को जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिंपली एक्सप्लेन किया है, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब द रेट एट विच द रिएक्टेंट प्रोसीड्स या रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज रेट लॉ। यानी किस रेट से किस स्पीड से जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है टू द प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली द रेट लॉस। तो रेट लॉ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट है वो कितने टाइम में कन्वर्ट होगा हमारे प्रोडक्ट में या रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। सो रेट लॉस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो वी कैन से दैट द रेट लॉ इज द फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। सो अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। So R is the rate of reaction, she is the concentration of the reactant. अब हमारे पास यहाँ पर different order of reactions होते हैं, ठीक है। Order of reactions basically for many reaction rate laws can be written in the form of simple expressions where the rate of reaction, जो आपका rate of reaction है, that is proportional to the concentration of the reactant raised to some power, ठीक है। मीन्स ये कि जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, ठीक है। वो पावर 0 भी हो सकती है, वो पावर 1 भी हो सकती है, वो पावर 2 भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन जो पावर उनके ऊपर होती है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। So if the reaction if the concentration of the reactant is decreasing in the reactor with the time, then the rate of reaction जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सो नेगेटिव साइन विल रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर सम नंबर।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट एंड प्रोसीड एट कांस्टेंट रेट, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट और एक कांस्टेंट रेट के साथ वो जो है आपका प्रोडक्ट या केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। ठीक है, सो R रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट K। ठीक है, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, हमें पता है कि रेट जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो DC इज इक्वल टू माइनस KdT। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है बाउंड्री कंडीशंस पे। बाउंड्री कंडीशंस के बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो यू विल गेट द फार्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ या रेट इक्वेशन। ठीक है, सो इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड और रेट से जो है वो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वी विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एज वी नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिक्रीजिंग, सो इसलिए हमारे पास जो लाइन बनेगी दैट विल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और K जो दैट इज द स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, they are also named as a monomolecular reaction. It is the chemical reaction in which the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant present. ठीक है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है that is directly proportional to the concentration of the pollutant which is present in the current scenario. ठीक है, सो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज K। सो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू माइनस KC, और R हमें पता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज DC ओवर DT दैट इज इक्वल टू माइनस KC। सो DC ओवर C को हम जितने भी C की टर्म्स हैं उसको एक साइड पे ले आएंगे और T की टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट इन बाउंड्री कंडीशंस एंड वी विल गेट द फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C नॉट E रेज टू पावर माइनस KT। C जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट एट आउटलेट, C नॉट इज द कंसंट्रेशन व्हिच इज गोइंग इन द रिएक्टर, E that is exponent, K जो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, T is the टाइम जो आप जिस टाइम के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट है E के पावर में, so that why we plot the log concentration versus time and the concentration is decreasing with the time passage of time and the slope of this line will give us the rate of reaction that is K. So the next concept is about the reactor theory, जिसमें हम different types of reactors को discuss करेंगे and we will see कि जो हमारी mass balance equation है type of the reactors के according and the flow regime के according हमारी mass balance की equation जो है वो change हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली slides में बताया। So सबसे पहले we will discuss the reactor theory and we will go through the definitions of the basic types of the reactor. So first of all the reactor. So reactor is basically refer to a vessel or a container जिसमें आपके chemical reaction होते हैं, यानी किसी भी कंटेनर में जिसमें आपके chemical reaction होते हैं that is known as a reactor. और हमारे पास 3 टाइप के reactors जो हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज अ completely mixed batch reactor, ठीक है, जिसे हमने batch reactor भी कहा था। ठीक है, सेकेंड वन इज अ कंटिन्यूस फ्लो स्टिरर टैंक रिएक्टर जिसे हम CSTR के नाम से भी कहते हैं, एंड देन द लास्ट वन इज अ प्लग फ्लो रिएक्टर जिसे हम PFR कहते हैं।
So now we will discuss these containers, these reactors one by one, and we will develop their mass balance equations for calculating the rate of reactions. So first of all, we will discuss about the completely mixed batch reactor. So completely mixed batch reactor is a closed system. ठीक है, ये closed system होता है, इसमें ना तो कोई flow in आता है, ना ही कोई flow out जाता है. So flow neither entering nor leaving the reactor. ठीक है, the reactants are initially introduced in the container. ठीक है, आप जो भी reactant एक दफ़ा आप उसके अंदर डाल देते हैं, and then you will well mixed and left for certain period of time, after which they are discharged to empty the container and the process is repeated. So concentration of the reactant changes with the time. So it is an unsteady state of the operation used for a batch scale experimental studies. ठीक है, सो कम्प्लीटली मिक्स बैच रिएक्टर एक क्लोज सिस्टम होता है जिसमें कोई फ्लो कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता इन एंड आउट. ठीक है, सेकेंडली इसमें एक दफ़ा हम कंटेनर को जो है फिल करते हैं एंड देन वी अलाउ सम पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो पानी स्टे करता है, अलाउ करते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होने हैं वो हो जाए. उसके बाद हम उसको एम्प्टी करते हैं और उसके बाद हम जो भी कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट की वो मेजर करते हैं. ठीक है, बैच कम्प्लीटली मिक्स बैच रिएक्टर में अगर हम नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस का ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज होगी, क्योंकि जो नॉन कंजर्वेटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास अनस्टेडी स्टेट होगी जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो नहीं होगा. स्टेडी स्टेट में क्या होता है, विद चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू जीरो. इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी कंसंट्रेशन रिएक्टर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, यानी जो कंसंट्रेशन आ रही है वही कंसंट्रेशन आपको बाहर मिल रही है. लेकिन कम्प्लीटली मैथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अनस्टेडी स्टेट कंडीशन हमारे पास डेवलप होती है जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. ठीक है, नॉर्मली हम इसको एक्सपेरिमेंट लैब में यूज करते हैं फॉर अ बैच स्केल एक्सपेरिमेंट स्टडीज. ठीक है, यानी लैब्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं फॉर द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें हम इसमें यूज़ करते हैं. कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उसमें हम पानी को डालते हैं और डालने से पहले हम उसका वाटर एनालिसिस जितने भी पैरामीटर्स हम के टेस्ट परफॉर्म करते हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम वी ऑलरेडी परफॉर्म दैट टेस्ट और उस टेस्ट की डिफरेंस हमें पता लग जाता है कि जो कोई भी रिएक्टेंट या जो पोल्यूटेंट था वो कन्वर्ट हो गया कि नहीं, या वो रिमूव हो गया, या उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है. So now we will develop the mass balance equation for the continuous batch reactor के लिए अब हम mass balance equation develop करेंगे. So सबसे पहले आपने जो आपकी इनफ्लो की इक्वेशन है उसको आप लिखेंगे. Mass balance की equation that is the accumulation rate minus the accumulation rate plus input minus output plus transformation rate. Accumulation rate that is V into dC over dt that is equal to input that is Q into C naught minus QC plus VR. Since no flow is occurring, कोई flow in और out नहीं जा रहा, so Q जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो. Therefore हमारे पास जो accumulation rate है वो transformation rate के equal हो जाएगा. V is equal to dC over dt that is equal to VR. ठीक है, सो V जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी विल हैव अ रेट ऑफ एक्यूमुलेशन दैट इज dC over dt that is equal to R. So now we will consider the first order reaction as we discussed previously that all the environmental engineering chemical reactions follow a first order reaction. That is the rate of change in concentration is directly proportional to the concentration of the substance present in the system. So that is R is equal to Kc. ठीक है, सो R की वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे दैट इज dC over dt दैट इज माइनस Kc. ठीक है, आप माइनस Kc पुट करेंगे एंड यू विल ब्रिंग ऑल द C terms on one side and T terms on other side, then you will integrate on the boundary conditions and you will get the formula of a completely mass batch reactor for a first order that is equal to C is equal to C naught e raised to power minus kT. ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला है. आप ये जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जहां पर R जो है वो हमारे पास इक्वल होगा K के. ठीक है, यानी R की जगह R की जो वैल्यू है वो आपने K पुट करनी है. सिंपली आप उसको इंटीग्रेट करेंगे टू द बाउंड्री कंडीशन एंड यू विल गेट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ कम्प्लीटली
completely mixed batch reactor. तो ये इक्वेशंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और द टाइप ऑफ द कंटेनर, टाइप ऑफ द रिएक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए और किस तरीके से करना है. सो दिस इज योर बेसिक इक्वेशन. ठीक है, दैट इज द मास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ये आपकी बेसिक इक्वेशन है जहाँ से आपने निकालना. यू शुड नो कि आपके पास जीरो ऑर्डर है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, यानी आर की वैल्यू क्या है इन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. The next type is a continuous flow stirred tank reactor, which is CSTR. So CSTR में हमारे पास inflows and outflows जो है वो continuous होते हैं. The content in the reactor are well mixed, so the concentration of the reactant in the reactor is same throughout the container as in the outflow. ठीक है, यानी जो क्योंकि कम्प्लीटली मिक्सिंग हो रही है इसलिए जो भी कंसंट्रेशन सी होगी यानी आउटलेट पे होगी वही कंसंट्रेशन आपके कंटेनर के अंदर होगी. So let's consider the concentration profile. अगर हम देखना चाहें तो C हमारे पास concentration एंटर हुई थी रिएक्टर में. ठीक है, वहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मिक्सिंग थी और कुछ रिएक्टेंट जो भी लोकल सब्सटेंस था वो रिएक्ट हुआ, वो ट्रांसफॉर्म होगा. ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ ड्रॉप आएगा और वो इनिशियली ड्रॉप स्टार्ट में ही आएगा. उसके बाद ये कंप्लीट मिक्सिंग है तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो थ्रू आउट द कंटेनर सेम होगी. So if the influent concentration C naught remain constant, the steady state will be achieved. ठीक है, अगर आपकी C की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट एक ही कंसंट्रेशन की वैल्यू जो एंटर हो रही है तो आप इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कर लेंगे. दैट द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 0. So now we will write the mass balance equation for a continuous stirred reactor. So mass balance equation, accumulation rate that is equal to V over dC equal to input Q into C naught minus output Q into C plus transformation rate that is V into R. So now under steady state condition, the change in concentration with respect to time will be equal to 0. और जो आपके पास TCSTR that is a detention time in the reactor. डिटेंशन टाइम बेसिकली क्या होता है? डिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय द वाटर टू स्टे इन द कंटेनर, यानी कितने टाइम के लिए वो पानी उस कंटेनर में रहा है. दैट इज नोन एज अ स्टेशनरी, दैट इज नोन एज अ डिटेंशन टाइम इन द रिएक्टर. तो डिटेंशन टाइम इन द रिएक्टर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर डिवाइडेड बाय द इनफ्लो ऑफ द रिएक्टर. ठीक है, सो हमारे पास जो DC ओवर DT है दैट विल बी इक्वल टू 0 और जो हमारे पास Q था वो कॉमन था, वो हमने कॉमन ले लिया एंड वी विल divide the left hand side of the equation by the volume. ठीक है, so Q over V आ जाएगा. So Q over V that is equal to CSTR that is time. ठीक है, टाइम हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ओवर फ्लो. सो आपके पास जो रेट R का फार्मूला आएगा वो आपके पास ये वाला फार्मूला R का डेवलप होगा. दैट इज C naught minus C divided by detention time of a CSTR. Now we will consider for first order reaction. हमें पता है कि first order reaction R जो है that is equal to the minus Kc. So we will put the value of R in the above equation and after putting the value you will solve the equation and you will get the formula for the continuous stirred reactor for a first order, that is C is the concentration in the outlet of the reactor that is equal to C naught divided by 1 plus KCSTR. थर्ड रिएक्टर हमारे पास आता है प्लग फ्लो रिएक्टर. सो प्लग फ्लो रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि फ्लो थ्रू द रिएक्टर इज कंसीडर्ड, द फ्लो थ्रू रिएक्टर इज ऑर्डरली विद नो एलिमेंट ऑफ फ्लूइड ओवरटेकिंग और मिक्सिंग. सो प्लग फ्लो रिएक्टर और कंटिन्यूस स्टिरड फ्लो रिएक्टर में डिफरेंस ये है कि इसमें फ्लो कंटिन्यूस होता है बट देयर इज नो मिक्सिंग विद द रिएक्टर. ठीक है, so the concentration inside the reactor will not same. ठीक है, और with the passage of time वो हमें पता है कि concentration जो है वो change होती है with respect to time. So जो भी concentration reactant के start और end पे होगी उसमें बहुत difference होगा और किसी भी center point पे होगी वो different होगी. So the concentration of the reactant C across the cross section of the reactor is same but varies along the direction of flow. ठीक है, जैसे जैसे फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी.
All fluid elements remain in the tank for the same time. Steady state can be achieved if the influent concentration remains constant. ठीक है, अगर हम इसमें कंसंट्रेशन का प्रोफाइल ड्रॉ करें जैसे कि हमने कम्प्लीटली स्टिरर में किया था जिसमें हमारे पास इनफ्लो आया था और सडन ड्रॉप के बाद थ्रू आउट द कंटेनर हमारे पास थ्रू आउट द रिएक्टर जो कंसंट्रेशन थी पोल्यूटेंट की वो कांस्टेंट थी. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की दैट विल चेंज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. So the concentration of the reactant will decrease along the length of the reactant. So now we will write the mathematical equation. So first of all, you have to consider the strip of fluid. ठीक है, हम उसमें से रिएक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं. ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dx width moving at the velocity vx across the cross section strip is be considered as the batch reactor. So जो strip हम consider करेंगे उसको हम consider करेंगे batch reactor से. So no diffusion or mixing is taking place. कोई diffusion और mixing नहीं हो रही है. In the start at time 0 और x is equal to 0 यानी distance 0 और time 0 पे the concentration of the reactant in the strip जो है वो आपके पास C है. If t is the time taken by the strip, the batch reactor to accomplish the reaction, then R is equal to dc over dt. Okay, which is the unsteady state condition. So now we will consider the first order reaction and we will write the value of R that is equal to minus Kc. So R is equal to dc over dt that is equal to minus Kc and we will integrate the above equation to the boundary conditions and यहाँ पर T जो है डिटेंशन टाइम है प्लग फ्लो रिएक्टर. ठीक है, so you will get the first order reactor concentration equation that is C is equal to C naught e raised to power minus K detection time plug flow reactor. So for first order reaction, the batch reactor and the plug flow reactor have the same efficiency. So now we will perform some numerical to understand how we can find out the concentration of the reactant of the different types of the reactant in the different flow region. So now we perform some numericals. The first one is considering the first order kinetics with K value of 0.23 per day and the detention time of 5 days. Find out the efficiencies achieved in plug flow and completely mixed tank. ठीक है, हमने efficiencies find out करनी है plug flow की और completely stirrer reactor की. तो सबसे पहले जो आपके पास given है वो आप लिख लें. So you have K that is 0.23 per day, then you have detention time that is 5 days, and you have to calculate the efficiencies which will be equal to C naught minus C divided by C naught. यानी इनपुट कंसंट्रेशन माइनस आउटपुट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी. सबसे पहले हम प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए फाइंड आउट करते हैं. वी ऑलरेडी हैव मेंशन्ड द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स C is equal to C naught e raised to power minus kt for the plug flow reactor. Put all the values. So हमने C over C naught find out करना है and we will put all the values and we will calculate the ratio C over C naught that is 0.361. Then we will calculate the efficiency. So इस equation को simplify किया है क्योंकि C naught जो है वो overall है तो C naught over C minus C over C naught that will be equal to 1 माइनस C over C naught. तो जो भी आपने रेशो कैलकुलेट किया उसमें से 1 माइनस करेंगे. सो प्लग फ्लो में आपके पास 68.4% एफिशिएंसी अचीव होगी. सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना है CSTR. सो CSTR फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दैट इज इक्वल टू C is equal to C naught divided by 1 plus KT. Put all the values and you will get the ratio of C over C naught that is equal to 0.465 and then you will calculate the efficiency that will be equals to 53.5%. ठीक है, so similarly you will perform the second numerical that is the nitrogen pentaoxide decomposes to nitrogen dioxide plus oxygen at a relatively low temperature. ठीक है, आपने प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम
log concentration versus time to determine the rate reaction order of reaction and calculate the rate constant. तो यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन है और कंसंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है. हमने सबसे पहले इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि जो भी आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है किस रेट से चेंज हो रही है, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, उसके लिए हमें पता है ग्राफिकली अगर हमने जीरो ऑर्डर का पुट करना है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन अचीव होनी चाहिए जब हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं. ठीक है, अगर आपका रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए इसको चेक करते हैं. जीरो ऑर्डर में आपने सिंपली कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आपने ग्राफ प्लॉट करना है जो कि हमने प्लॉट किया है. वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी कर्व लाइन आई है. ठीक है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो उसके लिए आपने कंसंट्रेशन के लिए लॉग लेना है, देन यू विल प्लॉट दैट लॉग अगेंस्ट द टाइम. So you will get the straight line. So it means कि जो आपका order of reaction है इस last numerical के लिए, that is a first order reaction. ठीक है, after that finding the first order reaction you will calculate. After calculating the order of reaction you will further calculate the things जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं. उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, सो यू विल परफॉर्म जस्ट सी कि आपके पास कौन से रिएक्टर्स गिवन है और किस तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस गिवन है. सो बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इसमें परफॉर्म किए हैं जिसमें यू आर एबल टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. यू आर आल्सो एबल टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यू हैव अ डाटा ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर. So inshallah you will perform these numericals, and if you have any problem we will have a brief discussion, or we can also discuss these numericals and theory in a question answer session as well. Thank you and see you in the question answer session.